Today we are going to start with chapter number 3 perception. आपने देखा होगा perceptions जो होते हैं हर इंसान के अलग अलग होते हैं. डिफरेंट लोगों के अपने अलग अलग डिफरेंट perceptions होते हैं. ठीक है, वो आपकी नेचर और आपके हर चीज से डिफर करते हैं. In ancient times, sage Narada often visited his earth as a messenger of God. He moved around the earth, met people and told them how merciful God is. ठीक है, वो आसपास लोगों के घूमता और बताता है कि गॉड कितने क्या है मर्सीफुल. During one of his visits, Sage Narada was passing through a dense forest. As he passed under a big old banyan tree, he happened to see queer things. He saw a long root from branches of the tree cascade down, and among them was a silvery one he had never seen. Narada was surprised. He returned to God. How great is the world that you have made, and still greater in phenomena that you present for your visual bliss. Thank you God. Saying this, he looked up the tree. वो देखता है, वो गॉड को सेज जो होते हैं देखता है कि ब्रांचेस वगैरह लटकी होती हैं, बैनन ट्री होता है, वहाँ पे वो बैठे होते हैं. उनसे कहता है कि you have made this still greater in this phenomena that you present of your visual bliss. Thank you God. Saying this at the look at up the tree. वो ट्री के ऊपर देखता हुआ क्या कहता है, थैंक यू God. To this amazement, he saw a hermit priest at one of the branches with his eyes closed, standing in deep meditation. वो एक hermit को देखता है, उसकी eyes बंद होती हैं और वो एक क्या ले रहा था, deep meditation में बैठा हुआ. His silvery hair had matted into a long braid which cascaded down along with the roots that emanated from the branches of the banyan tree. How severe penance he is undergoing, said Sage Narada to himself as he stepped forward to go in his way to heart. ठीक है, वो कहता है कि कितनी ज़्यादा ये मतलब मेडिटेशन में बैठे हैं, कितने ध्यान लगा के बैठे हैं. ठीक है, वो जब जा रहा होता है, when he stepped forward, just then the hermit opened his eyes and seeing Narada below called out in Narada, I am so surprised to find you here. तो अपनी आँख खोलकर नारदा से कहता है कि I am so surprised to find you here. I am going to this way to heaven that your silvery hair attracted me. How long have you been meditating here? asked Narada. और नारदा से बोलते हैं कितने टाइम से तुम यहाँ पे मेडिटेट कर रहे हो, तो तुम्हारे सिल्वरी हेयर है उसने मुझे अट्रैक्ट करा, तुम यहाँ पे रुक गए. Years have slipped by ever since I climbed up the tree to meditate, and please God, my hair have gone grey and have grown so long as to touch the ground. और हर्मिट कहता है कि मैं बहुत टाइम से, बहुत ईयर्स हो गए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ और मेरे बाल भी गिरे हुए हैं और ये इतने लंबे हो गए हैं कि ये ग्राउंड को टच कर रहे हैं. That's really great of you, retorted Narada. One of course need thy heart connect to realize God and make his soul blend with eternal bliss and emancipate from this worldly bond. In heaven, I suppose you will see God, won't you? asked the hermit. Yes, God has bestowed his blessing on me and he mercifully enough to enable me to sing him, said Narada. कि हाँ मुझे गॉड ने बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दी है, मुझे दिखाई भी दें. तो ऐसे कहता, कैन यू डू मी अ फेवर व्हाइल यू विल बी इन अ हेवन, क्या तुम मेरे लिए कोई फेवर कर सकते हो? यस सर्टेनली, नारदा सेड. जब हर्मिट कहता है तो नारदा ने कहा हाँ यस सर्टेनली, बिल्कुल. आई वॉन्ट यू टू आस्क अ क्वेश्चन टू गॉड फॉर मी, विल यू प्लीज डू दिस फेवर, द हर्मिट प्लीड. कि तुम मेरे लिए गॉड से क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसको प्लीड करता है. आई विल डेफिनेटली डू दैट, नारदा रिप्लाई. वो कहता है हाँ डेफिनेटली मैं तुम्हारे लिए करूँगा. उसको रिप्लाई करता है हर्मिट को. देन प्लीज आस्क गॉड, entreated the hermit, how many lives do I need to be born again and again to realize God and be able to emancipate my soul from a worldly bond. Ask him when I shall be able to see him so that I need no more to be born again and beget eternal abode in heaven. कि तुम पूछना कि और कितने मुझे जन्म लेने पड़ेंगे तुम्हें देखने के लिए, ठीक है, बार बार. ठीक है, all right, I will ask God your question and reply to you when I pass this way again, said Narada to cleave of the heart. वो कहता है ठीक है, तो मैं दोबारा यहाँ से पास हूँ, मैं गॉड से पूछ लूँगा, तुम्हें फिर आंसर दे दूँगा. Trading through the forest, he had not gone far. He saw another hermit singing blissfully hymns in praise of God. जब वो आगे जाता है वो देखता है एक और hermit क्या कर रहा था, गाना गा रहा था, blissful hymns गा रहा था in praise of God.
His face radiated with extreme pleasure. He would clap his hand and sometimes raise them high in the air as if he dancing. कभी तो ताली बजाता और कभी उनको ऊपर हाथ करके इतनी ताली बजाई जैसे वो क्या कर रहा हो, डांस कर रहा हो. Naranda stopped before him for some time and enjoyed the hymns that the hermit sang. Suddenly the hermit's eyes fell on Naranda. Bowing before him, the hermit said, "Welcome, O Narada. Where are you going?" जैसे उसकी आंख उस पर पड़ती तो कहता है, "Welcome Naranda. Where are you going?" तुम कहाँ जा रहे हो? तो नारदा रिप्लाई करता है, "I am on the way to heaven to see God." मैं वे पे हूँ heaven gate to see the God. I pleaded if you would ask a question to God for me. वो भी उसको प्लीड करता, कहते क्या तुम मेरे लिए गॉड से कुछ क्वेश्चन पूछोगे? Yes, I shall of sure do that. वो कहता हाँ, sure, I will do that. Then ask him how many more lives I have to born again before I see God and free my soul from his worldly bonds, said the hermit. वो भी वही बात कहता है जो पहले वाले हरमत ने कही थी कि और कितने मुझे जन्म लेने पड़ेंगे गॉड से मिलने के लिए. Yes, certainly, I will ask the question for you, said Naranda and moved on. Naranda visited heaven and remained there for many days, serving a great Lord. After a long time, he came down on the earth again and once again happened to pass through the forest. When he reached under the banyan tree, he found the hermit still sunk deep in meditation. जब दोबारा से वापस जाता है अर्थ पे, जब दोबारा से वो फॉरेस्ट की तरफ जा रहा होता है, वो देखता है कि जो हर्मिट है वो दोबारा से मेडिटेशन कर रहा है, बहुत ही ध्यान में लगा. Seeing him, the hermit cried exactly, "Naranda, did you ask God my question?" वो एकदम से नारदा से पूछता है, क्या तुमने गॉड से मेरा क्वेश्चन पूछा था? Yes, I did, replied Narada. God said that you have to be born again and again for 5 more lives before you see him and free your soul. वो कहता है कि हाँ, तुम बार बार जन्म लेना पड़ेगा 5 बार और, जिससे तुम क्या करो, गॉड को देख सको और अपने सोल को फ्री कर सको. Oh no, 5 more lives even after such a long hard meditation, cried the hermit with disapprobation. It makes me so sad and dejected. He began to sob. अब उससे बहुत ज़्यादा sad हो गया, बहुत ज़्यादा नाराज हो गया. You must rather be happy that God has decided to bestow His favor on you after only 5 lives, said Naranda. कि अच्छा है तुम्हें बस 5 ही जिंदगी देगी, 5 ही बार जन्म लेना. ठीक है, तुम्हें बहुत क्या करा है, भगवान ने बहुत ही क्या करा है, फेवर करा है. But the hermit cried sadly. He said, "I cannot wait for so long to realize God." Saying so, he got down from the tree and walked. ठीक है, ये क्या कि वो क्या करता है, वहां से चला जाता है. Narada felt sorry for the poor hermit and walked on. Soon he came to a place where he had met the other hermit during the last visit. The hermit was still here, sitting at a place and singing hymns, joyful clapping and dancing. वो जब जाता है दूसरे वाले hermit के पास, वो वहीं पे बैठा हुआ गाना गा रहा होता है, clapping कर रहा होता है. When he saw Narada, he said excitedly, "Did you ask God my question?" दोबारा से नारदा से वही पूछता है, क्या तुमने गॉड से मेरा क्वेश्चन पूछा? Yes, I did. He said that you can see him after as many lives as there is hair on your head, and then you will emancipate from the worldly bond. जितने तुम्हारे सर पे बाल है, उतनी बार तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा, तभी तुम गॉड से मिल पाओगे. Really, how great of God, I will live only for few number of lives. I realized him saying so. Hermit stood up and began to dance joyfully, singing hymns in praise of God. और वो खड़ा हो जाता है और बड़े खुशी से वो गाना गाना शुरू कर. A broad smile appeared on the splendid lips of Narada, and he walked up. And what a miracle! Suddenly a flash of light occurred there, and the whole area was bathed with the splendid light. A voice filled the atmosphere. "I am happy with your worship. I have decided to enable you to realize me and bestow on a permanent adorable home. Hereafter, you are emancipated from the materialistic and worldly bonds, and your soul will blend in me." और जो तुम्हारा soul है वो मेरे में क्या हो जाएगा, blend हो जाएगा. Then the light engulfed the hermit while Narada stood there praising the ways of God. We had seen how different perception helped one hermit while the other hermit failed to make it. ठीक है, एक ने तो कर लिया लेकिन दूसरा क्या होगा, उसको करने पे fail. That's all for today. Hope you understood the chapter. Thank you.